Assalamu alaikum everyone. My name is Anam Irfan and I'm from Electrical Engineering Department, Communication. Today I am making a video of Lab 5 related to signal processing. Signal processing basically involves conversion of data in a way that allows us to see things in it that are not really possible via direct observation. And as engineers, it also allows us to analyze these signals, also to optimize or to correct these signals. And these signals can be anything, may it be any scientific data or audio streams, images, video, anything. So in this lab, we have been assigned a course provided by MathWorks that is Signal Processing Onramp. Um, First of all, I would like to give a general overview of this course. So it is basically this course will be using MATLAB to analyze vibration signals from three stations in Alaska, seismic stations in Alaska, and will identify a signal from the earthquake on the other side of the earth and separate it from the local earthquakes from near the seismic stations. So let's get started with the course, and I'll be only helping you with getting started and with the initial tasks. Okay. So the first task of this course is they're asking us to generate a signal. And for that, first of all, we have to choose a sample rate. So as we know, in MATLAB, and they're asking us to name that variable fs. This is the task right here. So हम एक fs का signals variable लेंगे and specify sample rate of 100 hertz. तो मैं यहाँ पर 100 लिखूँ. The other part of the task is that create a signal named t that extends from 0 seconds to 1 second with time steps that are 1 by fs. That is half of the sample rate. So we know that जब हमने कोई स्टेप चूज करना होता है तो हम लोग कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं एंड सिंस द रेंज इज फ्रॉम 0 to 1 और बीच में we have step 1 over fs, so this and from 1. Now as you can see here, if you're having some problem, first of all वही बात है कि you have to think, अपने दिमाग पर जोर देना होगा कि क्वेश्चन का आंसर में क्या मांगा गया. मोस्टली दिस कोर्स इज इजी. अगर यू नो मैटलैब तो ये कोर्स आसान है. सो अगर कोई इशू आए तो यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं, सोल्यूशन भी देख सकते हैं. एंड अगर आपने अपना जो ये वो है रीसेट करना है तो वो भी कर सकते हैं. और कोर्स से रिलेटेड कोई रेफरेंस है वो भी मिल जाएगा यहाँ से. तो अब मैं अपना जो है जो मैंने टास्क किया मैं उसको सबमिट करूंगी. यहाँ मुझे रिजल्ट हो जाएगा कि मेरा ठीक है कि नहीं. So yes, it's fine. I'll click on next task. In the second task, they're asking us to create a 5 hertz sine signal named sec at the sample times in t. Then create a plot of sec versus t. And if you read this out, यहाँ पर इन्होंने हमें फॉर्मूला भी दे दिया है.
if you want to generate a sine wave, तो उसका formula है sin 2 pi of t. So we have to generate a sine signal named sig. So I'll be using a variable sig, and sine 2 direct by, I'm using this formula right here. And for f, I have this frequency 5 hertz. So instead of f, I'll be putting 5 right here and t. The other part is they're asking us to plot the signal. So plot and t versus signal. Submit. So I have this signal that ranges from 0 to 1. You can see with a step of 1 over fs, with a frequency of 5. So correct. Okay. Third task, create a vector of normally distributed random numbers. So by reading this statement, now I know that I'll be using the function random, which is RANDN, and numbers named noise that is the same size as sig. तो इसका जो साइज है वो यहाँ पर ऐसे, तो हम लोग sig डाल देंगे क्योंकि हमें वही साइज चाहिए जो कि sig का जो हमने अभी ऊपर बनाया है वो, and multiply the vector by 0.1 to scale the vector. So noise variable है and random generate करना है with the size sig and simple direct 0.1. I hope it's right. Yes, it is. Okay. So add the signal vector with the noise vector, name the output signal sig noisy, then create a plot. This is simple. Sig noisy. Sig noisy is equal to sig plus noise and plot t comma sig noisy. Submit. देखें I have this sig noisy जिसमें जो मेरा पहला सिग्नल था एंड उसमें जो रैंडम हमने जनरेट किया नॉइस, तो ये उसका कॉम्पोजिट सिग्नल बन गया और ये सिग्नल इसी. नेक्स्ट टास्क, create a square name a signal named SQ at the sample times in t, use a frequency of 5, then create a plot of SQ versus t. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि signal processing toolbox contains function for common waveforms like if you want अभी हम sine बना रहे थे, if you want square waveform, तो you have this function square in MATLAB. So SQ is equal to square and उसी तरह 2 steric by steric 5 is the frequency and t, just like we did for sine wave, and plot t comma SQ. Submit. As you can see here, it's correct, and I can also see this plotting.
Okay, so this is further practice. You can do that or skip it. I've explained this video, some part of this video, while I was explaining, I was giving the overview. Okay, so in this second part, the task is they're basically telling us कि हम लोग जो है वो MATLAB में अगर आपने import करना है signal को, because obviously just stations say they recorded the signals, and now you have, if you want to analyze those signals, firstly you have to import those signals. So for that you will be using read matrix and आगे quotations में your file name and उस data set को, then you can use it on MATLAB and you can do anything. Okay. So our task is to import a seismic signal stored in harp.csv. So we have harp in vector name harp, then plot the harp signal. So harp is equal to read matrix and my file name is harp.csv. And I have to plot this. So plot okay, harp. Submit. Oh, sorry. There's this mistake. Okay, as you can see here, हम लोगों ने वो जो डाटा सेट था, वो जो वैल्यूज थी जो कि हमारे पास harp.csv में CSV फाइल में पड़ी हुई थी, वो हमने इंपोर्ट कर ली है अपने मैटलैब पर. एंड ऑल्सो मैंने प्लॉट का फंक्शन दिया था, तो मेरे पास वो सिग्नल प्लॉट भी हो गए. तो अर्थक्वेक का जो सिग्नल था जो सिस्मिक स्टेशन पे रिकॉर्ड हुआ था, इट लुक्स लाइक दिस. ओके, दिस इज फर्दर practice. These videos are very important too. Okay, so previously जो video थी, they will be explaining these steps कि किस तरह you have to drag. तो मैं भी बता देती हूँ. इसमें MATLAB में ये वो है कि अगर आपने किसी सिग्नल को प्लॉट करना है या मतलब आप यू वांट टू डिस्प्ले इट, सिंपली जो हमारे पास वर्क स्पेस होती है, हम उधर से लेकर जाकर इसको ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास वो जो सिग्नल है वो हमारे पास डिस्प्ले, क्योंकि जो इसका ये है जो वर्क स्पेस है, ये हमारे पास ये हमें अलाउ करती है कि हम इसको इस तरह ड्रैग करके लेकर जाएं, तो ये हमें डिस्प्ले कर देगी. और ये हमारा जो हार्प सिग्नल था वो डिस्प्ले हो गया. तो मैं इसको सबमिट कर दूँ. नेक्स्ट टास्क. ओके, सेट सैंपल रेट टू 50 हर्ट्ज. यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ भी है कि टू सेट द टाइम इंफॉर्मेशन सिलेक्ट टाइम वैल्यूज इन द एनालाइजर टैब. तो एनालाइजर टैब ये है. एनालाइजर टैब में क्योंकि अब हम वी विल बी वर्किंग ऑन द सिग्नल, वो हो गया कि हमने कमांड्स दे दी एंड ऑल दैट. नाउ वी विल बी वर्किंग ऑन द सिग्नल. सिग्नल के साथ हम चेंजेस करेंगे, उसको क्रॉप करना सीखेंगे, उसमें और सिग्नल्स ऐड अप करना सीखेंगे और सारा कुछ. तो इसमें अब उसने कहा, वो ये कह रहा है कि इसका सैंपल रेट आप 50 हर्ट्ज कर दें. तो हम लोगों ने एनालाइजर में जाएंगे, एनालाइजर टैब में, एंड इधर टाइम वैल्यूज में जाएंगे. वर्क एंड सैंपल्स में मैं सैंपल रेट में जाऊंगी. यहाँ पर लिखा हुआ सैंपल रेट, और इधर मेरा सैंपल रेट हो जाएगा 50. और मैं इसको सबमिट कर दूँ. सैंपल रेट इज बेसिकली जो हर सैंपल के दरमियान में वो है.
यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि it is between each sample. Okay. To view the frequency content of a signal, you can display its power spectrum by clicking Spectrum on the Display tab. Display the power spectrum of the harp signal. तो हम डिस्प्ले में जाएंगे एंड यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि स्पेक्ट्रम पर क्लिक करें. तो ये हमने अपना सिग्नल सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी. हम बस स्पेक्ट्रम पर क्लिक कर देंगे तो ये इसका पावर स्पेक्ट्रम आ जाएगा. नेक्स्ट टास्क. Okay, while you display the power spectrum, a spectrum tab contains options to customize the visualization. The frequency ranges of these seismic surface waves is small, so to focus on the meaningful seismic activity, you can set the frequency limits of the power spectrum. तो वो हमें कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो है वो इसकी हम फ्रिक्वेंसी रेंज को 0 से 1 हर्ट्ज तक सेट करना चाह रहे हैं. तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड नहीं सॉरी, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड हमने इसकी फ्रिक्वेंसी लिमिट्स को करना है ना. तो हमने इसने क्या कहा है कि आपने क्या करना है, स्पेक्ट्रम टैब में जाना है एंड उधर यस दिस. तो मिनिमम क्या होगी फ्रिक्वेंसी, हमारी लिमिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से लेकर 1. गुड. दिस इज फर्दर प्रैक्टिस. ओके. The three seismic stations, HARP, PAX, and WANC, collected the seismic signals using different hardware. As you've seen, the data from the HARP station was sampled at 50 Hz. हम जो पहले signal देख रहे थे, it was from HARP station. The data from the PAX station was also sampled at 50 Hz, but the hardware was imperfect, so the spacing between each sample wasn't exactly 0.02 seconds. Since the time information of the signal isn't evenly spaced, time information at every sample needs to be specified. You can specify a vector instead of a sample rate using the time value time specification. Now we have this PAX signal in the signal tab and हमने time values button को use करना है to add time information using the vector PAX T. तो time values and PAX T. और ये टिक कर दूंगी यानी कि इसको मैं कंबाइन भी कर रही हूँ. ये नहीं हो रहा, ये इनकरेक्ट है. अच्छा यहाँ से भी जा, यहाँ से करना था. ठीक है, यहाँ पर हम वेक्टर डालेंगे. अपलोड हो गया. ओके करेक्ट. आई डोंट नो व्हाई वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था. तो बेसिकली हमें वो पूछ क्या रहा है, वो हमें कह रहा है कि बैक सिग्नल जो है वो हमारे पास था लेकिन उसका जो हार्डवेयर था इट वाज इम्परफेक्ट. So we used another vector pax_t and हमने उसकी जो टाइम वैल्यूज की इंफॉर्मेशन थी वो हमने अपने सिलेक्टेड सिग्नल में जो है वो यूज की. जिसमें पहले हम लोग सैम्पल टाइम यूज कर रहे थे अपने सिग्नल के लिए, तो अब हमने यहाँ पर एक वेक्टर को यूज किया कि ये हमें जो है वो सैम्पल टाइम की इंफॉर्मेशन दे देगा क्योंकि उसका जो हार्डवेयर था पैक्स का वो इटसेल्फ खराब था. टास्क 2 में set the sample rate of a wank signal to 100 Hz and display the signal. तो
डिस्प्ले भी करना है और इसकी सिग्नल कर देनी, सैंपल रेट कर देना है 100 हर्ट्ज. So instead of 50, we will be writing 100 hertz from the time values and obviously इसको डिस्प्ले भी करना है तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे तो हमें ये डिस्प्ले हो जाएगा होपफुली यस. और ये मार्कर्स हैं विच आर शोइंग कि कौन से कलर में डिस्प्ले हो रहा है. तो ये हमारे पास येलो में है, फिर रेड में है एंड देन ब्लू में. ओके. The different signal amplitude make it difficult to compare the signal in the time domain, but you can still compare them in the frequency domain. Display all three signals, then display the power spectra. Set the frequency limits from 0 to 1. तो हमने स्पेक्ट्रम का पावर स्पेक्ट्रम निकालना है. वो हमें आता है, स्पेक्ट्रम पे क्लिक करेंगे एंड पावर स्पेक्ट्रम आ जाएगा. फिर हम उसकी फ्रिक्वेंसी लिमिट्स को सेट कर देंगे उसी तरह 0 से 1 तक. तो मैं इस पर क्लिक करूंगी एंड स्पेक्ट्रम में 0 से 1 और सब. ओके. MATLAB एंड दिस सिग्नल प्रोसेसिंग में जो इंटरपोलेशन वाली टेक्निक है, इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज हम उसको यूज करते हुए जो है वो अपना सिग्नल को एक यूनिफॉर्मिटी हम अपने सिग्नल में ला सकते हैं. सो इसमें भी ये बता रहा है कि जो पैक सेस्मिक स्टेशन था वो यूनिफॉर्मली सैम्पल था एंड उनमें जो है वो यूनिफॉर्मली सैम्पल, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म. जो यूनिफॉर्म होता है उनमें इक्वल स्पेसिंग होती है, इक्वल पॉइंट होता है, बट जो पैक्स ने सिग्नल रिकॉर्ड किया था इट वाज नॉट यूनिफॉर्म. सो मोस्टली जो एनालिसिस हम करते हैं दे दे हैव रिक्वायरमेंट कि उनको यूनिफॉर्मली सैम्पल होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी हम उसको एनालाइज कर सकेंगे. सो वो क्या करेगा कि इट विल इंटरपोलेट द सिग्नल टू अ यूनिफॉर्म ग्रिड. यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम उसको पावर स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो वो इंटरपोलेशन की टेक्निक यूज करेगा, यानी कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट्स होंगे नियर टू द रियल पॉइंट्स उनको ज्वाइन करते हुए हमें एक यूनिफॉर्म सा स्पेक्ट्रम दे देगा. ओके. Before you modify a signal, it is best practice to duplicate the signal so that you can compare the signal before and after processing. To process the signal, follow these steps. Duplicate or rename the signal by right-clicking on the Signal tab. Okay. ठीक है. Highlight the signal you want to process and by clicking on them, the highlighted signals, not the checked signals, will be pre-processed in the next step. Click the pre-process in the Analyzer tab of Toolstrip to enter the pre-processing mode. Task क्या है? Duplicate the pack signal and name the new signal as packed uniform. Step by step करते हैं. यहाँ पर duplicate का option है, मैं क्लिक करती हूँ and I have packs copy. उसने क्या कहा है? Rename that signal. तो हम यहाँ से rename करेंगे packs underscore uniform. Okay. Use the resample pre-processing method to resample packs uniform to 50 hertz. Pre-process. Okay. Now they're asking us to use the resample. ये थोड़ा सा बोल्ड में लिखा होता है तो ये हमें बेसिकली बता रहा होता है कि आपने क्या यूज करना. तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगी resample एंड यस हियर इट इज. और यहाँ पर उसने हमें क्या कहा है कि वो 50 हर्ट्ज. यस 50 हर्ट्ज एंड क्लिक एक्सेप्ट ऑल. यहाँ पर पहले अप्लाई करेंगे और फिर एक्सेप्ट ऑल करेंगे और फिर पैक्स और पैक्स कॉपी को डिस्प्ले कर देंगे और फिर इसके बाद सबमिट करेंगे.
इनकरेक्ट। प्लॉटेड पैक्स, अच्छा मैंने रीनेम नहीं किया, मैंने कॉपी लिखा हुआ है, पैक्स अंडरस्कोर। ओके करेक्ट, वो नेम का इशू आ रहा था। um, मैंने कॉपी कर दिया था, इट इज पैक्स अंडरस्कोर यूनिफॉर्म। तो ये भी है कि इनको इन्होंने जो नेम्स दिए हुए हैं, यू हैव टू यूज दीज, अदरवाइज मेथड हमारा ठीक है। When you use the proper tools to interpolate a non-uniform sample to a uniform grid, the power spectrum of your signal shouldn't noticeably change. But if you change the sample rate, there is always a change in the power spectrum. So basically, they're saying कि हम जब interpolation वगैरह करते हैं तो हमारे power spectrum है वो इतना ज़्यादा change नहीं होता, लेकिन जब obviously you will change the sample rate तो आपका power spectrum भी change होगा, क्योंकि आप उनका जो sample rate है वो ही change कर रहे हैं signal का। Sample rate determines the highest frequency that can be correctly represented in the sample signal. So before you change the sample rate, you should look at the power spectrum to see where the frequencies are located. तो आप उसी के accordingly अपना sample rate जो है वो adjust करते हैं कि आपकी जो maximum frequency है वो क्या है, अपने power spectrum को देखते हुए, और आपकी जो मतलब maximum frequencies है वो कहाँ पर lie कर रही है। Okay. The signal recorded at the Wrangell station has a faster sample rate of 100 Hz. Look at the full frequency range of the bank signals power spectrum. तो ये इसकी, एक सेकेंड, आई थिंक इसको प्लॉट करना है। हाँ, अभी हम पावर स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें basically power spectrum को वो यूज करें in order to find the frequency range, information about frequency, कौन सी f max है, maximum, या आपकी जो फ्रिक्वेंसी वो किस अंदर करें। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो बैंक सिग्नल था उसको उसने कहा है कि फुल फ्रिक्वेंसी रेंज जो लुक एट दैट। सो आई जनरेटेड द पावर स्पेक्ट्रम, एंड उसकी वजह से आई कैन क्लियरली सी कि ये 100 तक जा रही है यहाँ पर, और ये जो फ्रिक्वेंसी 50 है। टास्क 3। Okay, when you resample to a slower sample rate, frequency content above fs by 2, where fs is sample rate after resampling, and distort the power spectrum. In the bank signal, there isn't significant power above 25 Hz, so you can try resampling the bank signal to 50 Hz so that it matches the sample rate of the harp and back signals. तो अब हम इसका जो sample rate है वो resample करेंगे। तो उसी तरह duplicate करना है and rename the copy bank underscore slow, bank underscore slow, and then resample by a factor। उसी तरह इसको प्लीज प्रोसेस करेंगे और रीसैंपल में जाएंगे। हम इसका जब भी इंटरपोलेशन वगैरह करनी होगी हम रीसैंपल, एंड they're asking us to resample it by a factor of 0.5, apply, accept all, and display that signal।
इनको आई थिंक हटाना है, सिर्फ वैंक और वैंक। ये मैंने रीनेम किया था, वैंक स्लो है। आई डोंट नो क्या इशू है रीनेम के साथ। वैंक स्लो। इज वैंक स्लो इक्वल टू रीसैम्पल्ड वैंक? इसकी फ्रिक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, पर इसकी है 0.500। स्पेक्ट्रम में अगर इसकी 100 है ना, तो इसकी हम लोग चेंज कर देते हैं। इसकी भी हाँ, मेक इट 50। Resample bank slow by a sample factor of 0.5, and अब चेंज हुआ है। अब अगर किसी उसमें इशू आ रहा है तो फिर यहाँ से हिंट भी ले सकते हैं। Resample yes, 0.5 yes, accept all। हम यहाँ पर इवेंट स्लो में है 0.5। इसको मैं रीसेट करती हूँ, आई थिंक कोई, इसको दोबारा करते हैं। ओके, सो डुप्लीकेट रीनेम बैंक अंडरस्कोर स्लो। ठीक है, और नाउ हम बैंक स्लो में इसको प्री प्रोसेस में जाएंगे। यहाँ पर
रीसैंपल में, एंड सैंपल रेट इज 0.5 हर्ट्ज है, एवरीथिंग इज फाइन, अप्लाई, ओके, एक्सेप्ट ऑल। अगर मैं इसका पावर स्पेक्ट्रम निकालूं, आई डोंट नो, कोई आई थिंक नेट का इशू है क्या, जस्ट नॉट गेटिंग डिस्प्लेड। लेकिन खैर, मैंने जो है वो अपना कोर्स अभी यहाँ तक ही किया था। आई एम स्टिल डूइंग इट, आई हैवंट completed it yet, so I've I've explained जहाँ तक I did this, and जितनी भी इंस्ट्रक्शंस को मैं समझ सकी थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। और आई डोंट नो लास्ट टास्क में क्या श्योर है, ये भी मैं देख लूंगी। I'll get back to you everyone, so दिस इज इट। यहाँ तक मैंने मेरी जो प्रोग्रेस है वो यहाँ तक ही है। सो थैंक यू एवरीवन।